mega viral in Pakistan, despite the fact that Pakistan has banned Twitter. I was going to say, you have 3.5 million views Yes. on this on Twitter. And has actually now banned Dropsite News. Like, we've been banned in Pakistan. And they have taken down Twitter. They even slowed the internet, which throughout Pakistan, they slowed the internet because of Dropsite News. And it still is going viral throughout there. So the video is, it's 15 minutes and it's 2 phone conversations. And it's an example of what's known as transnational repression, which means that a government is repressing somebody outside of its own borders. So let's say China is angry at a dissident and they go to Poland and they threaten them in Poland. Right. Or Pakistan or India, or lots of countries do this, but other countries hate it when they do that. Because in the hypothetical example I mentioned there, Poland, for instance, would hate it. Not because Poland has any particular opinion on whatever the thing is that China and this dissident are fighting about, or Pakistan and a dissident, but because it's an incursion onto Polish sovereignty. Turkey, for instance, had a diplomatic fit when Saudi Arabia killed Jamal Khashoggi in a consulate in Turkey. Right. Because that was a slap in the face. Like, we can do something on your soil and there's nothing you can do about it. So it's also, this is also India famously killed someone in Canada recently. Yes. And appears to have killed someone in California last week. A Sikh activist. So, and India is one of the biggest purveyors of this sort of repression and violence. But Pakistan is now doing it, as we've discovered, on an industrial scale. But it's very hard to prove. And people who testify to it often get written off as either paranoid or self-aggrandizing or kind of trying to like draw attention to their cause. Because if someone's coming after them, it's because they're engaged in some sort of protest or dissident activity. This time, not only was this call recorded, because I've heard it from a lot of people who have similarly recorded calls, but they were willing to publish it, which takes an enormous amount of personal courage because you're already under threat. Like, that's why they're coming after you. And so what's going on here, and the example we have is a Pakistani man who'd become a citizen of Australia. His brother was still back in Pakistan. The Australian man did 2 things. One, he started a petition urging people to sign on to a resolution sponsored by Greg Casar and Susan Wild here in the United States that was just a resolution supporting democracy, basically, in Pakistan, and calling into question the elections of February 8th. He also started a petition telling the EU that it should look into its trade deal with Pakistan, which has requirements around human rights, and if Pakistan is violating those requirements, the EU should look at its trade deal. Just a guy in Pakistan, just a guy in Australia who's of Pakistani descent doing 2 petitions. His brother gets abducted by about half a dozen men in black and taken to a jail cell nearby. And we know that this is a government operation because it's a real jail cell. It's not like they got taken to some basement and were trying to get a ransom of money like old school movie kidnappers. Right. This is a jail cell. It's a state operation. The brother tweets about the fact that his brother has been abducted. He then gets a phone call from his brother's number. And he knows he's been abducted, so... It's creepy. It's creepy. He answers the phone, and we can roll this animation of these 2 phone calls. And the animation was done by Isha Ghali, and she did a terrific job with it. Oh, yeah. So we can just roll this video here. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलमान साहब? ठीक ठाक। हेलो। जी जी ठीक ठाक। सलमान साहब क्या हाल है?
ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कौन बोल रहे हैं? आपको पता मैं आपके किस नंबर से कॉल कर रहा हूँ? जी जी, किसके नंबर से कॉल कर रहा हूँ? मेरे भाई के नंबर से। भाई किधर है आपका? रात को उठा के ले गए थे उसको जी कोई लोग। हाँ, कोई उसको रात को उठा के ले गया था। अच्छा आप मेरी बात सुने। जी। और अगर कोई भी वैसे 2 नंबरी या कोई और स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो अपने भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है? आप मुझे जरा तारुफ करवा दें, आप हैं कौन? मैं बताता हूँ ना, पहले मेरी सुन लो ना। ठीक है आप हैं किधर? आप ऑस्ट्रेलिया में? जी। आप ऑस्ट्रेलिया नेशनल हैं? जी और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है ना आपके पास? जी जी। तो मतलब यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। आपने पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखना मुनासिब नहीं समझा, आपने कहा ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी में ले लूं, देन यू शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा जी, ठीक है ठीक है? ठीक। आप लोग बाहर जाके बैठ गए हो और समझते हो कि आप बहुत बड़े फुल के ठेकेदार हो। अब मुझे ये बताएं, ये सिटीजन पोर्टल जो है ये कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ। हाँ, मैं चलाता हूँ। आप चलाते हैं। और इसके अलावा क्या क्या चलाते हैं? कुछ नहीं, बस। नहीं, ओ पोर्टल्स वो कौन चलाता है? ओपी वोटर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं चलाता हूँ। ये दोनों ट्विटर अकाउंट्स आप चलाते हैं? जी, एक ही ट्विटर अकाउंट है मेरा जी, जो आप इसका मेंशन कर रहे हो, एक ही है। नहीं, दो अलग नहीं है? नहीं, एक ही है। अच्छा, एक ही है। अभी आप ये करेंगे कि आप इस अकाउंट का ना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे भेजेंगे इसी नंबर पर। अच्छा जी, आई एम वेटिंग। नहीं, उससे क्या होगा? ठीक है? उससे क्या होगा? वो मैं आपको बताता हूँ ना, आप भेजेंगे? ये तो नहीं भेज रहा मैं, सॉरी, ये नहीं हो सकता। ना भेजेंगे, आपका भाई है हमारे पास और जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है? ठीक। चलिए, ओके ओके। बोल रहा हूँ। क्या हाल है मेरी जान? सलमान भैया, यार ये भाई मुझे लेके आए हुए हैं यहाँ पे और मेरे लिए काफी मसला हुआ है, तो आपकी मेहरबानी होगी, जैसा ये कह रहे हैं आप वैसा करें। क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ से बोल रहे हो ना, उस पे वो आप प्लीज ना करें, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। आप कहाँ पर हैं? किधर लेकर आए? मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, आपको कोई खाना वाना खाया? किसी ने मारा तो नहीं? आपको कुछ कहा तो नहीं? हाँ जी, खाना खाया है। जी, खाना खाया है। मारा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं नहीं करता गवर्नमेंट के खिलाफ बात। और बताएं। सर, और भी डिमांड आपकी? हेलो जी हेलो जी। हेलो जी सलमान साहब, जी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे आप यूजर नेम पासवर्ड है वो मुझे ही चाहिए। जी ठीक है? अभी अगले 1 मिनट में आपने जो एक ट्वीट की हुई है ना कि मेरा भाई है हुआ है, ये डिलीट करें और इसकी जगह एक ट्वीट करें कि मेरा भाई जो है वो बिल्कुल खैरियत से है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, आप घर आ जाएगा तो मैं ट्वीट कर दूंगा, पहले नहीं करूंगा। आप अच्छा चलिए इसको डिलीट कर दें। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यार ये तू मतलब तू समझ रहे हो कि तुम्हारा भाई कितने मसले में है? यार मेरी जान, मैंने बता दिया ना, मैंने नहीं करनी, बस बात खत्म हो गई। भाई मेरा खैरियत से घर पहुंचेगा तो उसके बाद कोई बात होगी। तड़ी नहीं लगानी, ठीक है? तड़ी की बात भाई को नहीं समझ आती, प्यार की बात समझ आती है मुझे, ठीक है? तो आप प्यार से मेरे भाई को घर छोड़ दें तो मैं उसके बाद आपकी बात मानूंगा, ठीक है? मुझे मारेगी अभी तुम सुनो, ठहर जाओ, मैं तुम्हें सीधा मारेगी मुझे। हटाओ इसको, ये सुनते जाओ। ठीक। आप मेरी जान, आपको पता है ना यहाँ पे लॉज एंड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ, पता है ना आपको? आप एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के भाई को टॉर्चर कर रहे हो, आपको इस बात का पता है ना? हाँ, आवाज आई है? हाँ जी, आ गई है।